जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सभी टर्म्स को देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट बोथ एक्सिस, एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, और टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सभी एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. The name itself has its meaning, dipole. Okay, electric dipole. So an electric dipole is a pair of, di stands for two, pair of two equal and opposite point charges separated by a small distance. Okay. स्टूडेंट, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई नया टर्म आपको मिलता है तो उसी समय उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एक बार वो टर्म और वो वोकेबुलरी आपको समझ में आ गई तो फिर आगे फिजिक्स समझनी आसान हो जाती है। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल बट फाइनाइट डिस्टेंस। कोई भी दो चार्जेज हैं, इक्वल और अपोजिट हैं, और वो कुछ दूरी पे रखे गए हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। सो नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बार बार कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बच्चे लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एग्जाम में पूछता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और बच्चे लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उस सिस्टम की स्ट्रेंथ, उस सिस्टम से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitude of either charge and their separation. Okay, and it is directed from negative to positive charge. जब आपने कहा कि इट इज़ अ वेक्टर, देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, you have a responsibility to say its magnitude as well as direction. So electric dipole moment is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of magnitude of either charge and the separation between them. Okay, and it is directed from negative charge to positive charge. So see the diagram. Suppose we have two charges, one is minus q and another is plus q. They are separated by distance 2a. यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, the total separation is 2a. 2a इसलिए लिया गया है क्योंकि सिमेट्रिकल है, बीच में कहीं सेंटर होगा, लेफ्ट साइड ए डिस्टेंस पे माइनस से होगा और राइट साइड ए डिस्टेंस पे प्लस क्यू होगा। तो ये सिंप्लिसिटी के लिए और सिमेट्रिकल नेचर की वजह से यहाँ पे हमने 2a डिस्टेंस लिया है। P vector शो किया गया है निगेटिव टू पॉजिटिव साइन। सो मैथमेटिकली द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L। 2L आर 2A, 2L कहो या 2A कहो, दोनों में से कोई भी एक सेपरेशन आपको डिनोट करना है, कोई एक लेके चलना है। 2A आप लिख सकते हो, यहाँ पे बाई मिस्टेक 2L लिख दिया गया क्योंकि डायग्राम में 2A लिए हैं, इसलिए यहाँ भी 2L लेना चाहिए, 2A लेना चाहिए। सो Q इंटू 2L, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P, एंड P कैप, this shows the direction. P cap is the unit vector along negative to positive charge. So this is the vector, this is the electric dipole moment. It is a vector quantity, its unit is coulomb meter. कैसे आया? Coulomb for charge q and meter for separation, so coulomb meter. LTA, LTA कैसे आया? L for length and AT for coulomb, A into T for coulomb charge, q is equal to I into T. So this is the electric dipole moment. So please be careful, जब आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन बताइए। जब आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो ये वेक्टर की वैल्यू बताइए। P is equal to Q into 2L along P cap. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन इन मैटर, हाउ मैटर रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, नाउ सी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द इज नेगेटिव चार्ज, द
lines are originated from plus and the inside negative. Okay, so this is the diagram. You have to practice it, draw by yourself. It is also given in NCERT. Now, some things you must note: net charge and dipole is 0, minus q plus q is equal to 0, but electric field due to electric dipole is not 0. Is it okay? The electric field due to electric field dipole is not 0. Now we want to calculate the electric field due to electric dipole. Okay, first we find the electric field on axial point. Axial point means the on the line joining minus q and q. AB is the axis of dipole, and either you go towards left side of A, or you go away from right side of B, and this whole line, this is the axial line. Suppose we want to calculate electric field due to this electric dipole at an axial point C as shown in the diagram. Okay, let the point is at a distance r from the center of dipole. Okay, so this distance, the distance of C from center is smaller, where we want to calculate the electric field. Here, in order to calculate the net electric field due to electric dipole, we use superposition principle. Dear students, we know that the electric field due to a system of charges is equal to the vector sum of electric field due to individual charges. Therefore, the electric field at C due to this dipole will be equal to E vector axis is equal to E plus vector and E minus vector. ये symbol यूज किया गया. E plus is the electric field due to positive charge and E minus is the electric field due to negative charge. Is it okay? See the direction. Here we know that from positive charge electric field is away from the positive charge, they were readily away. Therefore, E plus is along right side, right direction. And due to negative charge, electric field is towards the charge. Therefore, E minus is along this dipole towards left side. Okay, please careful about the direction of E plus and E minus. E plus प्लस चार्ज की ओर से की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ये रेडियली अवे होगी. ई माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी, ये इस वजह से रेडियली टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी. सो द टू फील्ड्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन. सो व्हाट इज द देयर रिजल्टेंट? सी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. वी आर राइटिंग है इन वेक्टर फॉर्म 1/4πε0 q by r square. We know that the electric field due to isolated charge is formula is 1/4πε0 q by r square. So the electric field due to plus charge is 1/4πε0 q by bc square. What is bc? The distance between plus charge and c point. q bc. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी r minus a. r minus a. The distance bc will be r minus a. Okay, so q by bc स्क्वायर. p कैप क्या दे रहा है? p कैप डायरेक्शन दे रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर. एलॉन्ग राइट डायरेक्शन p कैप दे रहा है. यूनिट वेक्टर हमने एज्यूम किया हुआ है एलॉन्ग राइट डायरेक्शन, एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? माइनस से प्लस की ओर है, ए बी की ओर है, मीन्स राइट डायरेक्शन है. तो उसी डायरेक्शन में ई प्लस भी है, इसलिए हमने पी कैप से मल्टीप्लाई कर लिया. सिमिलरली ई माइनस 1/4πε0 q by ac square. What is ac? ac is the distance of c point from a, ac, and its value will equal to r and plus a, r plus a. Okay, r plus a. So here the elect e plus and e minus 1/4πε0 q by ac square minus p cap. ये इसलिए दिया गया है क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट साइड है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो. सो उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में जो हमने यूनिट वेक्टर पी कैप एज्यूम किया है उससे ये अपोजिट डायरेक्शन में है. डेट इज वाई हियर नेगेटिव साइन इज यूज्ड. यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्यू को भी माइनस लिख दिया और माइनस पी को भी माइनस लिख दिया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है. ये ध्यान देना है. डिड यू गेट इट? पी कैप इज यूज टू शो द डायरेक्शन ओनली because it is the unit vector along the direction of electric dipole moment. Okay, so
the common things, we can write 1 by 4 pi epsilon naught q in the place of bc r minus a square, and in place of ac r plus a whole square, ac square r plus a square, and bc square r minus a square. Now you can take common things outside the bracket. 1 by 4 pi epsilon naught q, 1 by r minus a square, and 1 by minus 1 by r plus a whole square p cap. So taking LCM, this is a minus b whole square, this is a plus b square, and we know that a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. So this is denominator will be a r square and minus a square whole square. ओके, और ये क्लास प्रोडक्ट हुआ, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ दिया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आ रहे, एंड सिमिलरली विद माइनस साइन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आ रहे, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2 आ रहे प्लस 2 आ रहे हो गया. इसको आप खुद से लिखोगे तो समझ में आ जाएगा. सो द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस: 1 by 4 pi epsilon naught 4 by r square minus a square p cap. Now we know that p vector is equal to q into 2a p cap, the charge and the separation, product of charge and separation. This is electric dipole moment. Okay, so in this place q into 4ra, we can write 2p vector, 2p vector, and this r. Okay, this r. ओके, q इंटू 2a की जगह हमने p वेक्टर रख दिया, r एज इट इज है, p कैप p वेक्टर क्या डायरेक्शन दे दिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं. नाउ दिस इज द इक्वेशन 1. ओके, इफ यू राइट बाय योर ओन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली. नाउ फॉर शार्ट डाइपोल we discussed for the short dipole, means when the distance r is large as compared to the separation of two charges in the dipole, then r square minus a square can be written as only r square, because a square is very small as compared to r square. So this equation 1 will reduce to e axis is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p vector divided by r raised to power 4 into r. So r will cancel and we get the final expression like this: ex is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p vector by r cube. Is it okay? See this formula carefully. Two things you can notice from it: the magnitude of ex is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube, and its direction is along direction of p. The net field is along the direction of electric dipole moment. Another, E is proportional to 1 by r cube for the dipole. If you recall the formula for the electric field due to point charge, you must remember that E was proportional to 1 by r square. Okay, but here E is proportional to 1 by r cube. So you should note that electric field due to single charge is proportional to 1 by r square, while electric field due to dipole is proportional to 1 by r cube, where r is the distance where we want to calculate the electric field. So this is the electric field at the axial point. Now let us see electric field at equatorial point. First see the diagram. Equatorial point. What is equatorial point? This is the equatorial point. AB, the minus q is placed at A, plus q is placed at B. So what is equator? Equator is the perpendicular bisector. Equator is the perpendicular, the plane which bisect this line AB normally. This is known as equatorial plane. Okay, so we have considered a point C on equatorial line, okay, where we want to calculate the electric field. See the diagram carefully. Okay, first see the dipole, position of dipole: minus q at A position, plus q at B position. The separation is 2a. The dipole moment P vector is along negative to positive charge. Okay, now from center at a distance r, we consider point C. Okay, here we want to calculate the net field. First I want to explain the diagram.
Okay, so in order to calculate the electric field at point C, we have to find out the electric fields due to minus q charge and plus q charge. Minus q charge and plus q charge. So first we see about the plus q charge. We know that from isolated positive charge the electric field is radially away, बाहर की ओर होगा. इस वजह से जो E प्लस है, द ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इट विल बी अलोंग बी सी. बी से सी की ओर है एज शोन इन द डायग्राम. सिमिलरली the electric field due to minus q charge, it is radially towards the negative charge. That is why E minus is along ca c से a की ओर है E minus. Okay, now we have two fields, E plus due to positive charge and E minus due to negative charge as shown in the diagram by red lines. We have to find the resultant of these two. Okay, so what we will do, we divide these two into two components, one in normal direction and one in direction parallel to the axis of dipole. AB के parallel में, P vector के parallel में एक. So if you divide this plus E, what will happen, the upper one is written as E plus sine theta and the horizontal one is known as is written as E plus cos theta. Similarly, if you divide E minus into two component, one is E minus cos theta along horizontal direction and another is E minus sin theta in downward direction. E minus sin theta is in downward direction. थीटा कौन सा एंगल है, पहले हमने ये मान लिया कि ये सी ए बी इज थीटा. सो दिस एंगल विल बी this one is the alternate angles theta, and similarly this is the correspondence angles because AC is equal to BC, therefore these two angles will be same as theta. Angle CAB, angle CBA, both will be theta and therefore we can write here two angles theta, one in upward and one in downward. Okay, the total angle between E plus and E minus is 2 theta. Okay, so we want to find out the resultant of these two fields E plus and E minus. We are here using the method, this method, that we are dividing these into two components and then we want to find the direction. Obviously the horizontal components E plus cos theta and E minus cos theta, they are along same direction, therefore they will add up. And vertical components, one is in upward direction and one is in downward direction, so they are opposite, they try to cancel each other. Let us see the magnitude of this E plus and E minus. E plus is the electric field due to positive charge. Its value is 1 by 4 pi epsilon naught q by bc square. Bc is the distance. We have to calculate the distance. So bc is the distance. Okay, BC is the distance. BC is the distance is square root r square plus a square. Similarly, AC is the distance and it is equal to square root r square plus a square. Okay, by Pythagoras theorem. So in the place of BC we can write 1 by 4 pi epsilon naught r square plus a square. और यहाँ BC का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट खत्म हो गया है और केवल r स्क्वायर बच गया. ई प्लस की डायरेक्शन अलोंग बी सी है इसलिए हमने बी सी कैप एक यूनिट वेक्टर रख लिया इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए. सिमिलरली ई माइनस इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q by ए सी स्क्वायर. ए सी इज द डिस्टेंस एंड इट इज अगेन इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इट इज अलोंग सी ए. दैट इज वाई वी हैव टेकन अ यूनिट वेक्टर सी ए. इट इज अलोंग सी ए. नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव चार्ज की ओर वो होगा इसलिए सी ए. सो इन दोनों ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, दोनों फील्ड्स हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो इनके डायरेक्शंस तो अलग हैं लेकिन मैग्नीट्यूड्स क्या है, सेम है. ई प्लस के मैग्नीट्यूड ई माइनस के मैग्नीट्यूड के क्या है, बराबर है. ओके, सो व्हाट विल हैपन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस cos theta and E minus sin theta will be same and also the magnitude of E plus sin theta and E minus sin theta will be same. Therefore the component in upward direction and the component in downward direction, these will cancel each other and they will add up.
Since both are same, E plus cos theta and E minus cos theta are same, therefore result may be written as 2E cos theta. The result can be written as 2E cos theta. So in summary we can say that the resultant of E plus and E minus is 2E plus cos theta, and it is in the direction B2A along BA, means dipole moment के opposite direction में होगा. Is it okay? Along negative of P cap, negative of P cap. So we can write by superposition principle, the net field is the resultant of these two fields. Since the magnitudes of these fields are same, the component normal to dipoles cancel away and components along dipole axis add up to give net field. जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है. So the resultant E equatorial is E plus E minus cos theta P cap. वैल्यूज हम रख देंगे, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं ई प्लस के और ई माइनस के, इसलिए 2 ले लेंगे. 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस पी कैप. माइनस पी कैप शो कर रहा है कि ये जो नेट फील्ड है ये पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है. पी वेक्टर ए से बी की ओर है और ये उसके एंटी पैरेलल है. सो व्हाट इज द नेट फील्ड? 2 into 1/4 pi epsilon naught q by r square plus a square cos theta minus p cap. We will put the value of cos theta from the triangle. It is cos theta is equal to base by hypotenuse. Okay, so base is small a and hypotenuse is AC, so a by r square plus a square. So here we write a divided by r square plus square in the place of cos theta. When you solve it, we can use the relation p is equal to q into 2a p cap. So this expression reduced to E equatorial vector is equal to minus 1/4 pi epsilon naught p vector divided by r square plus a square to the power 3/2. Let this is equation 1. Okay. Again, where we place this value, p vector is equal to q into 2a p cap. Now for sad dipole, r is r is greater than a, therefore r square plus a square can be written as r square only, because a square will be very small as compared to r square. Then this E equatorial can be written as minus 1/4 pi epsilon naught p vector divided by r cube. Okay, it is clear that E equatorial, the electric field at equatorial plane, is along the negative direction of electric dipole moment, means opposite to the electric dipole moment. Now if you compare this equation, the expression for equatorial and E axis, this one 1/4 pi epsilon 2p by r cube, you will find that there is a difference in the direction. One is along p vector and the is along minus p vector, and this E axis is twice of the E equatorial. Therefore we may write like this: E axis is equal to minus 2 into E equatorial. Vector relation E axis is equal to minus 2 into E equatorial. So this is about the electric field due to electric dipole at its axial point and at its equatorial point. It is very important derivation. You should practice it by yourself. Okay. Now let us see what will happen when an electric dipole is placed in a uniform electric field. Okay, what will happen? See the diagram. We have drawn a uniform electric field and it is shown by the equi-spaced parallel lines. Its direction is along the right direction, and then a dipole AB is kept in it such that the dipole moment makes an angle theta with E. See the direction. The direction of p vector is along negative to positive, so this p vector makes angle theta with E. The forces on plus q charge due to electric field is along qv, along electric field vector, and its magnitude F will be equal to q into E. We know that E is equal to force by charge, therefore force is equal to charge into electric field.
So this is QE, the force on plus Q charge, and force on minus Q charge will be opposite to electric field. So it is minus QE as shown at point A. Okay, so when an electric dipole is placed in an electric field, okay, at some angle theta, the net force on it is zero. The net force on it is zero because one force Q is along E and another force Q is opposite to E. So two forces are equal and opposite, and the net force on the charge is zero, on the dipole is zero. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. अगर हमारी फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कोई भी ट्रांसलेशनल फोर्स नहीं लगता है. नेट फोर्स, इट इज रिटन इन द रेड लाइन, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस क्यू प्लस क्यू ई इज इक्वल टू जीरो. But see the effect of these equal and opposite forces. You have learnt torque in 11th class. When there are two equal and opposite forces with different line of action, they make a couple whose torque is equal to the product of magnitude of either charge and the perpendicular distance between the line of action of two forces. So what will happen? Though the net force on the dipole is zero, these two equal and opposite forces forms a couple which produces a torque that tries to align the dipole along B. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. ये जो टॉर्क एक्ट करेगा उसका काम क्या होगा? क्यू को क्यू ई के डायरेक्शन में खींचेगा और माइनस क्यू को क्यू ई अपोजिट टू ई खींचेगा. तो ये डाइपोल अलाइन होके क्या होना चाहेगा? इट विल ट्राई टू अलाइन द डायरेक्शन ऑफ ई. इस टार्क का टेंडेंसी क्या है? ये जो टार्क डेवलप हो रहा है इसकी टेंडेंसी क्या है कि वो ई के डायरेक्शन में होगा. ओके, सो अब ये टॉर्क कितना होगा? So the torque tau will be equal to magnitude of either force multiplied by perpendicular distance. So what are the two forces? One is QE and the is minus QE. The perpendicular distance between them is equal to BC. This is equal to BC. What is the value of BC? Since the angle is theta, therefore BAC angle BAC will be also theta. So if you apply sin theta formula, then sin theta is equal to perpendicular BC by hypotenuse AC. So perpendicular BC will be equal to hypotenuse AC sin theta and the hypotenuse AB sin theta. So hypotenuse, the value of hypotenuse AB is 2a, the separation, dipole length इसको बोलते हैं AB 2a. So the value of BC will be equal to 2a sin theta. Therefore the magnitude of torque, either force QE and perpendicular distance BC, QE BC की जगह पे आप AB sin थीटा लिख सकते हैं और AB की जगह पे आप 2a लिखेंगे तो फार्मूला QE 2a sin थीटा, Q इंटू 2a को आप P लिख सकते हैं. सो मैग्नीट्यूड इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा. P is a vector quantity, E is a vector quantity, and theta is the angle between them. Tau is also a vector quantity. Therefore, we can write the expression in vector form. Tau is equal to P cross E. Means the torque acting on dipole is equal to cross product of electric dipole moment and electric field. Students, don't reverse the direction. Tau is not equal to E cross P because we know that A cross B is not equal to B cross A. So this is the formula for torque acting on the dipole. So what is the summary? See, when an electric dipole is kept in a uniform electric field, the net translational force on the dipole is zero, but it experiences a torque that try to align the dipole in the direction of electric field. The magnitude of this torque is given by PE sin theta, where P is the dipole moment, is the electric field, and theta is the angle between P and E. In vector form, this torque is tau vector is equal to P vector cross E vector. Now study some cases. Case 1, if theta is equal to 0, means if P is along the direction of E, then sin theta 0 is equal to 0 and torque will be 0. No torque will act on the dipole. If theta is equal to 90 degree,
टाउ इज इक्वल टू पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो टाउ इज इक्वल टू पी ई. दिस इज द मैक्सिमम टार्क दैट एक्ट्स ऑन द डाइपोल. Okay, and it will act when the dipole is normal to the electric field. Now if dipole is kept in the electric field, third case, in such a way that electric dipole moment is opposite to the electric field, then theta is equal to 180 and the value of tau is equal to pe sine 180. Sine 180 की value 0, so again tau is 0. So there are two cases, case 1 and case 3. In these cases torque is 0. So these are the conditions of equilibrium. But out of these two, first one and third one, in both of these conditions, either theta is 0 or theta is 180, the torque acting on the dipole is 0. So these two conditions are condition of equilibrium. But one is stable equilibrium and another is unstable equilibrium. What is stable equilibrium? Dear student, stable equilibrium means, suppose if you displace the body by some distance, okay, if the body again regain its stability, it come back, then it is the stable equilibrium. And if the body go away and take another direction, then this is unstable equilibrium. So first case, when theta is 0, this is the case of stable equilibrium, and third case, theta is equal to 180, this is the case of unstable equilibrium. So this is all about electric dipole from the first chapter. Okay, thank you. Please comment on it.